दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4 BLDC मोटर का यूज करके एक RC कार बनाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि BLDC मोटर में काफ़ी ज़्यादा RPM होता है, तो हमें अपने कार में बहुत ज़्यादा RPM देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पे इसे बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे एक एल्युमिनियम पाइप का। तो यहाँ पे हमने 2 होल किया है और नीचे 2 होल और ऊपर 2 होल, पूरे हमने यहाँ पे 6 होल किए हैं। और इसके बाद हम यूज कर रहे हैं इस मोटर के एल्युमिनियम क्लैंप का, तो आप भी इसी का यूज कीजिएगा। और फिर यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ एक 1400 kV का BLDC मोटर का, तो आप भी इसी का यूज कीजिएगा, या फिर 1000 kV के मोटर का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से इन सब का सेटअप करते हैं।
गाइस तो हमारी कार अब चलने के लिए एकदम रेडी हो चुकी है, तो चलिए चलते हैं इसके टेस्टिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।